Assalamu alaikum and welcome to Educare. Our next topic is pension. What is pension? Pension is said to be investment of funds by an individual to provide him income during his retirement, and for this they have to contribute regularly into a registered pension scheme. Pension scheme is a saving plan that attract reliefs, tax reliefs. Pension is a long-term investment and amount can grow up into this scheme tax-free. So it is exempt from income tax as well as capital gain tax. So that is how they can enjoy the tax relief in this regard. But अब हम बात करते हैं about the types of scheme. There are two types of pension scheme. First is said to be occupational pension scheme and second personal pension scheme. In occupational pension scheme, this is a scheme set up by the employer for the benefit of employee. And in this scheme, whatever amount has been contributed by the employee is said to be allowable deduction. And whatever is the contribution made by the employer is an exempt income. So remember, in a pension scheme usually set up by employer, some amount is contributed by the employer and some amount is deducted from the salary of employee to be contributed into this pension scheme. So ये उनके बारे में बात हो रही है कि एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन की है फॉर द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉई, तो ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन नो डाउट एम्प्लॉई का बेनिफिट है, बट इट इज़ सेड टू बी एग्जाम बेनिफिट. और एम्प्लॉई जो खुद कंट्रीब्यूशन कर रहा है दैट इज़ अलाउएबल डिडक्शन. मीन्स ये वो अमाउंट है जो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगी. रिमेंबर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट. क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट में हम टोटल इनकम में से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्ट करते थे इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट इनकम एंड देन फिर उसमें से पर्सनल अलाउंस डिडक्ट किया जाता था. सो यहाँ पे भी आपके पास ये रिलीफ है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन एंड दैट विल बी डिडक्टेड बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल अलाउंस. नाउ इट इज़ अबाउट पर्सनल पेंशन स्कीम. If a employee is not willing to contribute into the employer scheme or join the employer scheme, he can set up his own personal pension scheme. And this scheme can be set up by a self-employed person or any third party on behalf of individual. So it can be set up by individual, employed or self-employed. In this scheme, whatever amount has been contributed by employee will extend the rate band, just like gifted donation. Gifted donation में जो भी पेमेंट की जाती थी उसे ग्रॉस अप कर दिया जाता था और ग्रॉस अप अमाउंट रेट बैंड को इधर इट इज़ अ बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड उसे एक्सटेंड कर देती थी. सो सेम इन द पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन द रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटेंडिंग द रेट बैंड्स. एंड अगेन वट एवर अमाउंट हैज़ बिन कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इज सेड टू बी exempt benefit for the employee. Now, how to calculate the tax relief on contribution? Step 1 is to calculate maximum annual amount. It will be higher of 3600 or 100% of relevant earning. We need to consider two amounts. One is the benchmark amount 3600 and second is 100% of relevant earning. Relevant earning is said to be taxable trading profit, employment income, income from furnished holiday accommodation, but it doesn't include the saving income. So first हमने क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम एनुअल अमाउंट क्या है. For this we need to compare the 3600 and 100% of relevant earning. Whichever is higher is said to be your maximum annual amount. Then maximum annual amount को आप कंपेयर करेंगे ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन के साथ, and now whichever is lower is said to be amount qualified for relief. फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम एनुअल अमाउंट क्या है. ये कैसे देखा जाता है, वी हैव टू कंपेयर 3600 एंड 100% ऑफ रेलेवेंट अर्निंग. इन दोनों में से जो भी आपके पास हायर होगी वो आपकी मैक्सिमम एनुअल अमाउंट होगी. इन द सेकेंड स्टेप यू हैव टू कंपेयर दिस मैक्सिमम एनुअल अमाउंट विद अ ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन. And now whichever is lower is said to be amount qualified for relief. अब इन दोनों अमाउंट में से जो भी लेस होगी that qualify for relief.
And how to calculate the tax relief? Whatever is the amount qualified for relief, multiply this by 20%. Now, what amount the individual has to pay? Individual has to pay gross contribution minus tax relief. ये जो हमने थर्ड स्टेप में टैक्स रिलीफ कैलकुलेट किया है, इसे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट इज द अमाउंट दैट इंडिविजुअल हैज़ टू पे. Remember, relevant earning is said to be earning that includes taxable trading profit, employment income, and profit from furnished holiday letting, but do not include investment income. So, before going for the next topic, we will consider some illustration in this regard. Like this is an illustration from the Kaplan study text. The following individual made gross pension contribution into the personal pension scheme in the tax year 22-23. Karima, she has a contribution, personal pension contribution of 2500, but she has no relevant earning. So, in the first step, we have to consider 3600 or 100% of relevant earning. Because Karima has no relevant earning, so 3600 or 0, whichever is higher is said to be your maximum annual amount. So, that will be 3600. Now, in the second step, you have to compare the maximum annual amount with gross pension contribution, and whichever is low is said to be your amount allowed for relief, and that is 2500 here. And in this question, they have asked us explain the maximum amount of pension contribution for which tax relief is available for each individual in the tax year. So, हमें सिर्फ ये बताना है कि किस अमाउंट पे टैक्स रिलीफ मिलेगा, तो वो इस केस में 2500 है. Again, in accordance with the first step, you have to identify 3600 by comparing 3600 and 100% of relevant earning. Whichever is higher is said to be your maximum annual amount. करीमा के केस में 3600 बेंचमार्क अमाउंट और रेलेवेंट अर्निंग 0 है, तो whichever is higher is 3600. This is said to be maximum annual amount. Now you have to compare the maximum annual amount with a gross contribution, gross pension contribution, and in accordance with rule, whichever is lower is said to be amount allowed for tax relief. So, in case of Karima, this 2500 is the amount for tax relief. In the second case, Nadia, the relevant earning is again 0. So, we have to compare 3600 and 0, and whichever is higher is said to be your maximum annual amount. So, in this case also 3600 is your maximum annual amount. Now, you have to compare the maximum annual amount of 3600 with gross pension contribution of 6000. And in accordance with rule, whichever is lower is amount allowed for relief. So, here amount allowed for relief is 3600. That is how with regard to Kenza, her relevant earning is 35,000. So, we have to compare 3600 in case of Kenza. We have to compare 3600 with 100% of relevant earning, which is 75,000. So, whichever is higher is said to be maximum annual amount, and this is 75,000. 75,000 is maximum annual amount, right? So, now you have to compare the maximum annual amount of 75,000 with a gross contribution of 36,000, and whichever is lower is said to be amount allowed for relief. So, it will be 36,000. Again, in case of Yasmin, first you have to consider 3600 and compare with 100% of relevant earning, which is 38,000. So, whichever is higher is said to be maximum annual amount, that is 38,000. Now, you need to compare this 38,000 with a gross pension contribution of 45,000, and here whichever is lower is said to be your amount allowed for relief. So, this is how we have calculated the amount allowed for relief in these 4 cases.
Here now, in case of Andy, again, the question's requirement is explain how tax relief for the pension contribution will be given in the tax year 22-23 for each individual, and calculate the income tax liability for Don, Ed and Fran for the tax year 22-23. So at initial stage you have to ignore the annual allowance. So first, in the case of Andy, the maximum annual amount calculation is done by comparing 3600 with the relevant earning of 0. So in the first step हम क्या करते हैं, whichever is greater is said to be your maximum annual amount. So maximum annual amount आपके पास आ जाएगी 3600. Now you need to compare this 3600 with 5000 of contribution. Maximum annual amount 3600 है और pension contribution 5000 है. You will compare these two figures and whichever is lower is said to be amount allowed for tax relief, right? In the third step, what we'll do, 3600 को हम multiply कर देंगे 20% tax relief से to get the tax relief of 720. In the third step हम क्या करते हैं, जो भी amount available है tax relief के लिए, qualify कर रही है tax relief के लिए, उसे आपने 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास टैक्स रिलीफ आ गया 720. Now this person has contributed 5000. Out of this 5000, the relief would be deducted and this is the remaining amount 4280 to be contributed by the individual. ये वो अमाउंट है कि जो इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करनी होगी. Remember that the stepwise approach. In the first step, you have to compare 3600 with 100% of relevant earning. In the second step, maximum annual amount is compared with the gross pension contribution and now whichever is lower is amount qualified for relief. In the third step, जो कि हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, amount qualified for relief multiplied by 20% will give you the tax relief. And in the fourth step, you have to consider what individual has to pay. And for this, from gross contribution, you are deducting tax relief. So this is what we have done here and find that 4280 is the amount to be contributed by Andy. So this is the amount that is contributed by Andy. Same is the case for Brad. Brad's maximum annual amount is 20,000 because you have to compare 3600 to 20,000. तो उसकी maximum annual amount आ गई 20,000. Then maximum annual amount को gross contribution से compare करेंगे, whichever is less is said to be amount allowed for relief. So ये amount आ गई allowed for relief और इस amount का 20% जो है वो tax relief आ जाएगा उसका 1000 और gross contribution में से आप ये 1000 less कर देंगे तो remaining amount is to be contributed by individual Brad. Same is the case with the Cindy. In the case of Cindy, 20,000 will be compared with the 3600 of benchmark amount and you will get the maximum annual amount as 20,000. Then you have to compare the maximum annual amount 20,000 with the gross pension contribution 25,000. Now whichever is less is said to be your amount allowed for relief जो कि 20,000 आ जाती है. इस 20,000 पे 20% टैक्स आपके पास आ जाता है 4,000. सो 4,000 डिडक्ट कर दें 25 में से तो 21,000 उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी. सो दैट इज़ हाउ. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एनुअल अमाउंट बाय कंपेयरिंग इट 3600 विद 100% ऑफ अर्निंग, तो वो 20,000 आ गई आपके पास. देन यू हैव टू कंसिडर कंपेयरिंग बाय 20,000 विद ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ 25,000, विच एवर इज़ लोअर इज अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ, वो भी 20,000 आती है. उस पर 20% रिलीफ आपके पास आ गया 4,000. अब ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन में से 4,000 लेस कर दी. इन केस ऑफ डॉन के हवाले से मेंशन है कि इसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट की अमाउंट 95,000 और 40,000 उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन है. सो अगेन वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस एंड इन दिस केस विल गेट दैट 32,000 इज़ द अमाउंट टू बी पेड बाय डॉन. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि इसकी टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, सो दैट इज़ वाई हम पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन के हवाले से रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, by extended the
rate band. So as his gross contribution is 40,000, तो ये 40,000 की contribution उसके basic rate band को 77,700 कर देगी. Whatever is the amount of gross pension contribution by the individual, it will extend the basic rate band. अच्छा, अब हम ये डॉन के केस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डॉन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा है, प्रीवियस की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का नहीं कहा था. सो फॉर दिस, फ्रॉम डॉन्स इनकम ऑफ 95,000, फर्स्ट टू डिडक्ट 12,570 which is the personal allowance, and you will get the taxable income of 82,430. As we have extended the basic rate band, now on 77,700 of income, tax will be paid at 20%, and above this income means जो difference है 82,430 और 77,700 का, उस 4730 की income पे 40% tax pay किया जा रहा है. So remember, here we are ignoring the annual allowance, which we will discuss later on. In case of ED, again we have to calculate this, and in that case our tax liability can be simply calculated, and the procedure is same. Same is the case of last person, Fran. In case of Fran, there is no adjustment of personal allowance because adjusted net income is above the 1,25,140 level. That is why there is no personal allowance. So you have to consider it. If found any problem, you can ask me. Now it is about occupational pension scheme, जिसमें हमने बात की थी कि occupational pension scheme में whatever is the contribution by the employee will deduct his total income, and it is done before personal allowance adjustment. So in this question, Carlos is employed by Lloyd on an annual salary of 80,000. He is a member of company's occupational pension scheme. So you need to understand whether the scheme has been mentioned as personal pension scheme or occupational pension scheme. So this is the occupational pension scheme. Carlos, the person who is an employee, pays 3%, and Lloyd Limited pays 5%. We know that the contribution by employer is exempt. So ये जो लॉयल कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये तो आपकी एग्जेम्प्ट होगी, इसे तो आपने कंसिडर नहीं करना, शामिल नहीं करना. He has no other income. Calculate Carlos' income tax liability for the tax year 22-23, showing tax relief is obtained for his pension contribution. So first we have to record his total income, which is 80,000. Now before the deduction of personal allowance, you have to deduct the employee's contribution into the occupational pension scheme. If his salary is 80,000 and he is contributing 3%, so 3% of 80,000 will be 2,400. So first we have to deduct 2,400 as relief, and his remaining income will be 77,600. Now from this 77,600 you have to deduct the personal allowance, which is 12,570, and 65,030 is his taxable income. As we have been asked to calculate the income tax liability, remember that in case of personal pension scheme rate band extend होता है. Occupational pension scheme में जो भी contribution है वो आपकी taxable income को reduce कर देती है. So यहाँ पे ये occupational pension scheme है, यहाँ पे rate band extend नहीं होना. 65,030 में से 37,700 जो पहली अमाउंट है उस पर 20% टैक्स, 7540, and how much his income is in excess of this, 65,030 minus 37,700, this is 27,330. इस पे टैक्स 40% की रेट पे किया जाएगा. Again this is 10,932. 10,932. So this is his tax liability in total. By sum this up, it will be 27,481, 18,472. Now we need to consider the annual allowance, which is 40,000. Remember one thing, that the individual can contribute any amount into the pension scheme, right? But if its pension contribution is in excess of annual allowance, the tax will be charged.
तो एनुअल अलाउंस हमारे पास लाइक 40,000 है, विच मीन्स कि अगर आपकी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन अप टू 40,000 है, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा चार्ज। बट अगर आपकी पर्सनल पेंशन ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 50,000 हो जाती है तो एक्सेस 10,000 पे आपको टैक्स चार्ज पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रेट बैंड। सो दिस इज़ व्हाट एनुअल अलाउंस, that up to 40,000 of your contribution into the personal pension fund will not attract any additional tax. But if your gross contribution is in excess of 40,000, in that case it will be charged at the rate in accordance with your rate band. So annual allowance 40,000 है, but can be increased, लेकिन increase भी हो सकता है। कैसे increase हो सकता है? By bringing unused allowance brought forward from the previous 3 year. अगर पिछले 3 सालों में आपने कोई एनुअल अलाउंस यूज़ नहीं किया, अनयूज एनुअल अलाउंस उस सूरत में होता है कि अगर पिछले साल आपने कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में 25,000 की थी, 25,000 की थी, एनुअल अलाउंस की लिमिट 40,000 है, इसका मतलब है आपने 15,000 की एनुअल अलाउंस की लिमिट यूज़ नहीं की, तो वो 15,000 अनयूज़ हो गया। सो पिछले 3 सालों का अनयूज एनुअल अलाउंस आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं, FIFO बेसिस पे कर सकते हैं, और इस तरह आपकी एनुअल अलाउंस की अमाउंट इंक्रीज हो सकती है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इफ टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड एनुअल अलाउंस? सो इसकी बात हम कर चुके हैं। द एक्सेस इज टैक्सेबल, जिसे आप कहते हैं एनुअल अलाउंस चार्ज। इफ योर टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू पेंशन स्कीम इज इन एक्सेस ऑफ एनुअल अलाउंस, then in that case the excess will be chargeable to tax. Like in this example illustration, Steve and Mike made gross pension contribution as follows. Steve की 1920 की contribution 52,000, 2021 की 25,000 और 21-22 की 17,000 है। Steve has a member of pension scheme since the tax year 12-13, तो ये शुरू से ही registered pension scheme का member है। Mike joined the scheme in 2021. Both have relevant earning of 100,000 per annum. State the maximum gross contribution that Steve and Mike could make in the tax year 22-23 without incurring any annual allowance tax charge. So we need to consider first, what is the unused annual allowance of these two persons. So first बात करते हैं Steve की। In the year 1920 he has contributed 52,000, means इस साल उसका कोई unused annual allowance नहीं है, because he has contributed in this year more than 40,000, so he has no unused allowance for 1920. But 2021 में he has contributed 25,000, लिमिट 40,000 की है, तो 15,000 का इसका annual allowance unused आ गया, because as per rule they have been allowed to contribute up to 40,000. As he has contributed only 25,000, means 15,000 of his annual allowance has not been used, right? Next is 21-22, in which he has contributed 17,000. So here 23,000 of his annual allowance has not been used. So पिछले 2 सालों का unused annual allowance उसका आ गया 38,000. करंट ईयर में तो उसको 40,000 का अलाउंस अवेलेबल है ही, सो ही कैन कंट्रीब्यूट इनटू पेंशन कंट्रीब्यूशन 78,000 ऑफ अमाउंट which will not attract annual allowance tax charge. Again we have to consider in the first step what is the unused allowance in the previous year. तो हमने आइडेंटिफाई किया कि 2021 के हवाले से unused allowance 15,000 था और 21-22 के हवाले से 23,000. सो प्रीवियस 2 years का अनयूज अलाउंस आ गया 38,000. नाउ उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है 22-23 के बारे में. सो ऑब्वियसली 22-23 का अपना भी एनुअल अलाउंस है, दैट इज़ 40,000. सो सम अप होकर ये टोटल अलाउंस अब आपके पास अवेलेबल है स्टीव के हवाले से 78,000. सो एज पर आंसर ऑफ द क्वेश्चन यू कैन कंट्रीब्यूट अप टू 78,000 in order to find the amount that would not incur annual allowance tax charge. While in case of Mike, he has contributed 15,000 in 2021, so उसका first year में 25,000 का unused allowance है. In the second year, he has contributed only 6,000,
So he has with him 34,000 of unused allowance with respect to 21-22. So total will be 59,000. 59,000 of unused allowance Mike has for the previous 2 years. And for 22-23, the allowance of 40,000 when added, it will be total 99,000. सो 99,000 तक की इनकम ये अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जिस पे से कोई एनुअल अलाउंस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा. Same is the case here in test understanding 2. Here Ahmed has made the following gross contribution to his personal pension fund और आपको मेंशन की गई है उसकी relevant earning 1 लाख की. State the amount of unused annual allowance to carry forward to the tax year 23-24. So थोड़ा सा important है क्वेश्चन. In the 1920 year उसका जो एनुअल अलाउंस अनयूज्ड है फॉर द ईयर 1920 अनयूज्ड allowances 28,000. For the year 2021 his annual allowances 26,000 is contribution, so unused annual allowances 14,000. In the year 21-22 he has a contribution of 33,000, so annual allowance unused of previous year is 7,000. But now he is contributing 58,000 in 22-23. So इसका मतलब है इस साल 22-23 के ईयर में ये पिछले सालों का अलाउंस यूज़ करेगा. पिछले सालों का टोटल अलाउंस उसके पास आ रहा है 42 and 7 49,000, राइट. सो as he has contributed 58,000, so how much amount is in excess of 40,000? कितनी amount उससे ज़्यादा है? That is 18,000, right? And he has to use his unused annual allowance on FIFO basis. इस बात का मतलब ये है कि फर्स्ट इसे सबसे पहला जो ईयर है इसका अनयूज अलाउंस यूज़ करना है, राइट. FIFO basis का मतलब है कि whenever he has to use the previous year unused allowance, he has to use on FIFO basis, means सबसे पहला जो साल था उसका अलाउंस उसे सबसे पहले यूज़ करना. सो 28,000 का अनयूज अलाउंस 1920 का था, उसमें से 18,000 वो यूज़ कर लेता है, तो रिमेनिंग उसके पास कोई भी एनुअल इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं रहता, राइट. नाउ फॉर ईयर 23-24, for year 23-24 we have to consider that this is the year 23-24. हमें क्या बताया हुआ है? पिछले 3 सालों का अलाउंस आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो 23-24 में से अगर 3 ईयर्स माइनस कर दें तो वो ईयर आ जाता है 2021, राइट. तो आपके पास चाहे ये अलाउंस अभी भी कुछ अनयूज पड़ा हुआ है, बट इट कैन नॉट बी यूज नाउ. 28,000 में से 18,000 का आपने अलाउंस यूज़ कर लिया था 22-23 में, अभी भी 1920 का 10,000 अलाउंस आपके पास पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है, बट इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड. वाई सो? बिकॉज एज पर रूल हम सिर्फ प्रीवियस 3 ईयर का एनुअल अलाउंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर 23-24, इट मीन्स 3 years बैक दिस विल बी द ईयर 2021. सो हम 2021 से ऑनवर्ड जो अलाउंस है वो कंसिडर करते हैं कि वो अनयूज्ड है. दैट इज़ 14 and 7 21,000. उसमें करंट ईयर का अलाउंस आप 40,000 ऐड करेंगे, सो इट विल बी 61,000 इन टोटल. बट देयर क्वेश्चन इज स्टेट द अमाउंट अनयूज अलाउंस टू कैरी फॉरवर्ड. सो कैरी फॉरवर्ड आपके पास सिर्फ ये 21,000 होगा, राइट. सो नाउ द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल अलाउंस चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, सोफिया हैज़ बिन सेल्फ एम्प्लॉयड इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. इन द टैक्स ईयर 22-23 शी हैड अ ट्रेडिंग इनकम ऑफ 1,05,000 and made a gross contribution of 90,000, right? Sophia does not have any unused annual allowance brought forward. So they have clearly mentioned that she has no annual unused allowance. Explain how tax relief will be obtained for the pension contribution made by Sophia and calculate her income tax liability for the tax year 22-23. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसकी इनकम है 1,05,000, राइट. तो क्या हमें पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है? पर्सनल अलाउंस एडजस्ट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड नेट इनकम, और उसके लिए आपकी इनकम 1,05,000 में से ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस गिफ्ट डोनेशन लेस कर दिया जाता है.
यहाँ पे ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करें तो आपके पास सिर्फ 15,000 की इनकम आती है। इसका मतलब है उसे अपना पर्सनल अलाउंस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर डिडक्टिंग 12,570 आपके पास रिमेनिंग अमाउंट, उसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाती है 92,430, राइट। दिस इज हर taxable income. Now we have to consider what is the extended basic rate band. Extended basic rate band क्या आ जाएगा इसका 37,700 प्लस क्रॉस कंट्रीब्यूशन ऑफ 90,000, तो ये एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड आ जाएगा उसका 1,27,700, ठीक है। दिस विल बी हर एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड। थर्ड थिंग हमें ये कंसिडर करनी है कि उसकी कितनी इनकम जो है वो आपकी एनुअल अलाउंस चार्ज की आ जाएगी। एनुअल अलाउंस चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कंट्रीब्यूशन में से आपका करंट ईयर की एनुअल अलाउंस लिमिट, चूँकि सिर्फ इसकी करंट ईयर की है तो वो लेस कर दें तो हमारे पास ये 50,000 का एक्स्ट्रा चार्ज भी हमें पे करना, राइट। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, सोफिया, एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। फर्स्ट हमारे पास 92,430 पे हम 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 92,430 पे 20% टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 18,486, राइट। फिर इसके बाद ये जो फर्दर 50,000 का एनुअल अलाउंस चार्ज है, इस पर भी तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो हमारी बेसिक रेट बैंड की लिमिट थी 1,27,700, उसमें से 92,430 यूज़ कर ली। बेसिक लिमिट जो एक्सटेंड होके थी 1,27,700, उसमें से हमने 92,430 की लिमिट यूज़ कर ली। सो रिमेनिंग हमारे पास 35,270 की अमाउंट अभी भी बेसिक टैक्स रेट पे चार्ज की जा सकती है, 35,270 की अमाउंट। सो इट विल बी टैक्स at 20% and this will be 7054. Now 50,000 की अमाउंट एनुअल अलाउंस चार्ज की थी, उसमें से 35,270 टैक्स हो गया, बाकी रह गया 14,730 और इस पे 40% पे टैक्स लगाया जाएगा। and that will be 5892. सो इनको सम कर लेंगे, टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। रिमेंबर दैट फर्स्ट हमने ये बात कंसिडर की कि वेदर दिस इनकम रिक्वायर एडजस्टमेंट इन पर्सनल अलाउंस और नॉट। इसके लिए हमने कैलकुलेट की एडजस्टेड नेट इनकम विच इज़ ओनली 15,000। तो वी नो दैट कि 15,000 पे तो आपके पास कोई भी आपको अपने पर्सनल अलाउंस को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। Second, as this person has a contribution of 90,000, so that is why this gross contribution in personal pension scheme will extend the basic rate band to 1,27,700. थर्ड बात ये कि चूंकि उसकी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 90,000 है और एनुअल अलाउंस 40,000 है, तो 50,000 की अमाउंट उसकी आ जाती है एनुअल अलाउंस चार्ज की। सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द टैक्स लायबिलिटी। फर्स्ट वी हैव टू डिडक्ट द पर्सनल अलाउंस, द टैक्सेबल इनकम इज़ 92,430, उस पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया 18,486। दैन 35,270 की आपके पास जो रिमेनिंग रेट बैंड अनयूज बेसिक रेट बैंड रह गया था, कैसे फाइंड आउट किया, 1,27,700 का एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड, उसमें से 92,000 हम यूज़ कर चुके हैं, बाकी आपके पास अनयूज बेसिक रेट बैंड आ गया 35,270 का। इस पर 20% के रेट के हिसाब से टैक्स लगाया गया एंड रिमेनिंग आपके पास जितने भी एनुअल अलाउंस चार्ज था आउट ऑफ 50,000, 35,000 पे आप टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, रिमेनिंग 14,730 पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया। सो सेम इज़ लाइक दैट यू हैव बीन गिवन दिस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू ट्राई दिस थर्ड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। While fourth is same is the case, there should not be any problem in doing this. Now we will talk about the restriction of annual allowance. So restriction of annual allowance is based on adjusted income. This is not adjusted net income, this is adjusted income. And what is adjusted income? How it should be calculated? This is the formula to calculate the adjusted income. And that is net income plus
एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ओनली इन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। अगर एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में होगी तो वही ऐड की जाएगी। प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन किसी भी स्कीम में, चाहे वो पर्सनल पेंशन स्कीम में है चाहे वो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है, वो ऐड कर दी जाएगी। तो नेट इनकम में ये दोनों वैल्यू ऐड कर दी जाएँ तो आपके पास एडजस्टेड इनकम आ जाती है। नाउ स्टेप वाइज अप्रोच, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच ऑफ योर एडजस्टेड इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 2,40,000, कितनी आपकी इनकम 2,40,000 से ज़्यादा है। देन डिवाइडेड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 40,000। फर्स्ट स्टेप में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि एडजस्टेड इनकम का कितना पोर्शन 2,40,000 से ज़्यादा है, देन उसे डिवाइड कर देना 2 से एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देना फ्रॉम 40,000। बट दिस विल रिड्यूस एनुअल अलाउंस टू 4,000, बट एक लिमिट है कि एनुअल अलाउंस पर्सनल अलाउंस की तरह ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये कम से कम 4,000 रहेगा, नॉट बिलो 4,000। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करें कि एडजस्टेड इनकम 2,90,000 है, तो हाउ मच ऑफ दिस पोर्शन इज इन एक्सेस ऑफ 2,40,000? This is 50,000 divided by 2, this is 25,000, and now deduct from 40,000, this will be 15,000 of your annual allowance. तो फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया कितनी इनकम आपकी एडजस्टेड इनकम इन एक्सेस ऑफ 2,40,000 है, एंड देन फिर उसके बाद आपने डिवाइड किया उसे 2 से एंड देन एनुअल अलाउंस की 40,000 की लिमिट से लेस कर दिया। नाउ कंसिडर इफ़ योर एडजस्टेड इनकम इज़ 3,10,000, देन divided by 2 you will get 35,000 and 40,000 minus 35,000 will give you 5,000। तो इस सूरत में कि अगर एडजस्टेड इनकम 3,10,000 है, एनुअल अलाउंस सिर्फ 5,000 रह जाएगा। बट व्हाट इफ योर एडजस्टेड इनकम इज 3,12,000, इन दैट केस द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 2,40,000 विल बी 72,000। Divide this by 2 and you will get 36,000, and when 40,000 out of 40,000 this 36,000 is subtracted, you will get the annual allowance of 4,000। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी एडजस्टेड इनकम 3,12,000 से ग्रेटर है तो इट मीन्स यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस। आपको याद रहना चाहिए कि उस सूरत में 4,000 ही एनुअल अलाउंस रहेगा, बिकॉज एनुअल अलाउंस इससे लेस नहीं हो सकता। So in this illustration, the following individual have occupational pension schemes into which the following contribution were made during the tax year. Employees contribution is 30,000, employer contribution is 5,000, and taxable employment income is given as 2 lakh. So word is important, taxable employment income, which means this is net income. एंड एज पर फार्मूला हमें क्या करना है, हमें नेट इनकम में क्या चीज़ें ऐड करनी है टू गेट द एडजस्टेड इनकम। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी ऐड करनी है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी ऐड करनी है। सो आफ्टर एडिंग 5 and 30,000 द एडजस्टेड इनकम विल बी 2,35,000। एज दिस इज लेस दैन 2,40,000 तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। In the next case, this is 3,10,000 plus 2 plus 8, so it is in total 3,20,000. So we know that अगर आपकी टैक्स एडजस्टेड इनकम 3,12,000 से ज़्यादा हो तो आपका अलाउंस जो है वो सिर्फ 4,000 आ जाता है। there is no need to calculate that. And in third case, this is 250 plus 20 plus 12, and that will be 282. So you have to find how much portion is in excess of for 2,40,000, this is 42,000 divided by 2, 21,000, and less 21 from 40,000. So your adjusted amount reduced annual allowance will be 19,000.
So in case of Excel, it is easy to calculate. Excel is self-employed and has trading profit of 2,40,000. In the tax year 22-23, he also has a taxable saving income of 5,000 and made the gross pension contribution of 40,000. But in case of Ingrid, he is employed and has an annual salary of 2,90,000. Annual salary of 2,90,000. She also has dividend income of 8,000. In the tax year 22-23, she paid 10% of her salary into the employer's occupational pension scheme, and her employer contributed 5% of her salary into the scheme. So here first we have to calculate the net income, and net income कैसे calculate की जाती है, उसमें जो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन है ना 10% वो भी डिडक्ट कर दी जाए. तो अगर 2,90,000 उसकी सैलरी है, इसमें 10% इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन वो लेस कर दी जाए, तो नेट इनकम विल बी 2,61,000. अब इस 2,61,000 में आप ऐड करेंगे 29,000 एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन इनटू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम एंड 5% 14,500 एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एंड प्लस 8,000 ऑफ डिविडेंड. So this will be 3,12,500 of total income. So remember words, this is said to be annual salary. Annual salary का मतलब है इसमें से जो अमाउंट है एम्प्लॉई की अपनी कंट्रीब्यूशन की वो डिडक्ट नहीं हुई. So we have to first calculate the net income, which is the annual salary minus employee's contribution. This is said to be net income, and after this net income you have to, in accordance with the formula, find out the value of adjusted income. As per formula, you know that what you have to do, employees contribution into occupational pension scheme and employers contribution into any scheme will be added back. So here we added back these two figures and find out what is the value of his income, adjusted income. And on the basis of income which is greater than 3,12,000, it means that there is no need to calculate. Only you have to mention that the annual allowance will be reduced to 4,000. So this is the requirement of the question to calculate the annual allowance. Now about further rules. This is about assessing pension fund. Once invested funds in a registered pension schemes are accumulated and grow tax free. Individuals with money purchase scheme have complete flexibility in the way in which they can access the accumulated fund in their pension scheme. Something further to be described, that the types of occupational pension schemes are defined benefit scheme and money purchase scheme. Occupational pension scheme की further type में defined benefit scheme और money purchase scheme भी हैं. Defined benefit scheme ये है कि benefit obtained when taking the pension are linked to the level of earning of the employee. यानी आपके पास जो पेंशन है उसकी अमाउंट बेस करती है कि एम्प्लॉई कितना अर्न कर रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. और मनी परचेज स्कीम जिसे डिफाइन कंट्रीब्यूशन स्कीम भी कहते हैं, इसमें बेनिफिट ऑब्टेन व्हेन टेकिंग द पेंशन डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. होता ये है कि जब कोई पेंशन के हवाले से अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है फ्रॉम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दीज अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इनटू सम अकाउंट, सम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहे और अमाउंट ये मंथ बाय मंथ ईयर बाय ईयर अकोमुलेट होती रहे. सो ये डिपेंड करता है मनी परचेज स्कीम में कि कितना बेनिफिट दिया जाएगा एम्प्लॉय को, कि वो स्कीम कितना बेहतर, जो इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें इन्वेस्टमेंट की है वो कितना बेहतर वर्क कर रही है. सो इन अकॉर्डेंस विद दिस दे हैव मेंशन दैट इंडिविजुअल विद मनी परचेज स्कीम हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन द वे इन विच दे कैन एक्सेस द अकोमुलेटेड फंड्स. They can withdraw 25% of fund as a tax-free lump sum. But for the balance 75% of fund, these can be accessed in a variety of ways in accordance with their individual circumstances. Withdrawal from the balance of fund are taxed on the rate of non-saving income. Like जितनी भी उनकी non-saving income है, जिस भी रेट बैंड पे वो लाया कर रहे हैं उस हिसाब से either they have to pay 20% और 40 और 45%. नेक्स्ट बात है लाइफ टाइम अलाउंस की. देयर इज़ ओनली अ लिमिट अपॉन द एनुअल कंट्रीब्यूशन अपॉन विच टैक्स रिलीफ इज़ अवेलेबल. तो टैक्स रिलीफ कितनी अमाउंट पे मैक्सिमम अवेलेबल है? 10,73,600 पे. बट इफ़ द वैल्यू ऑफ पेंशन फंड एक्सीड लाइफ टाइम अलाउंस, अगर आपकी पेंशन फंड इस लाइफ टाइम अलाउंस से बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? एन एडिशनल इनकम टैक्स चार्ज अराइजेज ऑन द एक्सेस फंड. और ये किस वक्त अराइज होता है? जिस वक्त आप विड्रॉ करते हैं.
डिपॉजिट रहने पे नहीं विड्रॉ किया वो टैक्स चार्ज किया जाता. So this is about chapter 6 of pension, and there are some assignment question. So I will share it with you with these notes. So you have to do this as assignment.